Assalamu alaikum students, how are you? आज हम एक टेस्ट लेकर आए हैं. Previously I have given the lecture on noun, common noun, proper noun, number noun, concrete noun and abstract noun. Now the turn is of test. Are you ready for the test? Yes, you must be ready for it. You see, there is a question paper in front of you. Final assessment of abstract noun, concrete noun and number noun. Do it and submit after 20 minutes by the WhatsApp. यानी आपने ये असेसमेंट अपनी करनी है, ये शीट आपने सॉल्व करनी है, क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें और उसके बाद 20 मिनट के अंदर आपने इसको WhatsApp के ज़रिए हमें सबमिट कर देना है. ठीक है. तो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द abstract, concrete and number noun in the following sentences. बच्चों बहुत केयरफुली आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि abstract noun कौन सा है, concrete noun कौन सा है और number noun कौन सी है. ठीक है. आपके सामने आप देखिए स्क्रीन पर आते जो आ रहे हैं सेंटेंसेस. सेंटेंस 1 इज रीड इट, रीड लाउडली इसको रीड कीजिए. यस, if you want to note it down, note it down. Sentence 2, read it. Sentence 3, sentence 4, sentence 5, number 6, number 7, number 8, nine, 10, 11, 12, 13 and number 14. Hurry up, now do it and remember all the concepts which are given. Yes, आप सारे कॉन्सेप्ट्स देखें और उसके अकॉर्डिंगली इसको अटैम्प्ट करें फास्टली, देन सबमिट करवाएं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.